चलो अस वो वन टेरिडोफाइटा क्या गो ठीक है अस वो चलो अस वो ब्रायोफाइटास क्या गई ठीक है ब्रायोफाइटास क्या गई वो टेरिडोफाइटास क्या गई ठीक है इसी टेरिडोफाइटा अत मुतलिक गोडनुक क्वेश्चन थवन याद टेरिडोफाइटा कम दिसम टर्म द टर्म टेरिडोफाइटा इज प्रपोज्ड बाय इस दिसम टर्म हैकलन हैकलन दिसम टर्म टर्म टेरिडोफाइटा कम दिसम हैकलो अर्नेस्ट हैकल अम दिसम टर्म ठीक है अम पत द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा क्या वन द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा वन टेरिडोलॉजी द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा क्या वन टेरिडोलॉजी लॉजी यह दोयम पॉइंट ठीक है त्रेयम पॉइंट टेरिडोफाइटा क्या वन यह लिखमुत बुक पे टेरिडोफाइटा वन रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन गई ब्रायोफाइट्स ठीक है टेरिडोफाइट्स क्या वन रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम ठीक इन 3 पॉइंट इन थवन याद कि इमो मज क्वेश्चन यथ ठीक है बस टेरिडोफाइटा दयम नाव इन दयम नाव आमुत दिन वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइटा दयम नाव वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स क्रिप्टोगैम्स छुपित ना क्रिप्टोगैमी यस पॉलिनेशन गसान इनसाइड द फ्लावर टेरिडोफाइटास अमुक मतलब वेस्क्यूलर प्लांट्स इन तेल वेस्क्यूलर प्लांट्स गो टेरिडोफाइटास आर वेस्क्यूलर प्लांट्स थव सा लिखित ब्रायोफाइटास वेस्क्यूलर प्लांट्स क्या टेरिडोफाइटास वेस्क्यूलर प्लांट्स यम तमुक मतलब क्या गो वेस्क्यूलर प्लांट्स मतलब अमुक मतलब गो कि टेरिडोफाइटा मज जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है थव ये लिखे टेरिडोफाइटास आर वेस्क्यूलर प्लांट्स तो इन मज प्रेजेंट आसान क्या जाइलम एंड फ्लोएम इन मज प्रेजेंट आसान जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है जाइलम एंड फ्लोएम आसान यम टेरिडोफाइटास ठीक है अत मज आसान वेसल्स जाइलम वेसल्स ठीक है बेच आसान कंपेनियन सेल्स जाइलम वेसल्स कंपेनियन सेल्स कत मज आसान फ्लोएमस मज छना कंपेनियन सेल्स आसान फ्लोएमस मज टेरिडोफाइटा मज जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आसान एब्सेंट यह थवन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद यह नीटस मज क्वेश्चन आमुत वारिया लटि टेरिडोफाइटा मज आसान जाइलम वेसल्स तो कंपेनियन सेल्स फ्लोएम एब्सेंट जाइलम टेरिडोफाइटा मज आसान जाइलम जाइलमन मज एग्जांपल जाइलम वेसल्स ट्रैकिड्स ठीक है वेसल्स आसान टेरिडोफाइटा मज एब्सेंट यानी ट्रैकिड्स आसान प्रेजेंट ठीक है बेच आसान कंपेनियन सेल यस पार्ट ऑफ जाइलम फ्लोएम यानी फ्लोएमस वारिया टाइप्स तमो मज कंपेनियन सेल सह मज एब्सेंट जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स क्या एब्सेंट यह थवन याद ठीक है फ्लोएम यम लिखमुत बुक द टेरिडोफाइटा इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स यानी एग्जांपल पे कर स्टार्ट अगर टेरिडोफाइटा पढ़ो तेल क्या पढ़ो हॉर्सटेल एंड फर्न यह एग्जामस में अगर क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरिडोफाइटा वन हॉर्सटेल एंड फर्न वसा अगर बुक दिमो नजर वसा हॉर्सटेल एंड फर्न्स आर गोडनुक क्वेश्चन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स एंड हॉर्नवॉट्स गो यह स्टार्ट क्वेश्चन यमो दितमुत कस यह यानी गोडनिची लाइन थवन याद हॉर्सटेल एंड फर्न्स आर टेरिडोफाइटास
अत दम नाव ये अमुक हॉर्सटेलुक अत इक्विस्टम क्या नाव इक्विस्टम EQUISETUM थोस लिखित हॉर्सटेल एंड फर्नस आर टेरिडोफाइटास यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम गए यह क्वेश्चन बुक थोमुत दिथ यह क्वेश्चन हसा हेकु ये ठीक है हाँ टेरिडोफाइटास क्या मेडिसिनल पर्पज क्या ब्या सॉइल बाइंडिंग पर्पज सॉइल बाइंडर्स यानी सॉइल बाइंड थवान कर पान वन ठीक है यूज कर मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स ये कुछ फंक्शन वंक्शन लगान तक पोश वोश तथ सत्यान क्या ऑर्नामेंटल प्लांट्स ठीक है गो टेरिडोफाइटास यूज कर एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स गो अमन फंक्शन क्या मेडिसिनल पर्पज इन फंक्शन बे सॉइल बाइंडर्स इन फंक्शन बे क्या ऑर्नामेंटल प्लांट्स एवोल्यूशनरी अगर वो टेरिडोफाइटास फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स टू पॉजेस वेस्कुलर टिश्यू ठीक है वैसे यम गडनथ क्वेश्चन दितमुत विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट टू इवॉल्व हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है गो फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट हसा फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट यमिस जाइलम वेसल्स जाइलम तो फ्लोएम ठीक है फाउंड यह कत लबन ठीक है क्वेश्चन हेक बनित ब्रायोफाइट आर फाउंड नियर ठीक है तथ टेबल दिथ टेरिडोफाइट आर फाउंड ठीक है यानी हैबिटेट कत ठीक है यह थवन याद टेबल बनावन कि ब्रायोफाइट हसा 3-4 जायन लबन टेरिडोफाइट हसा 3-4 जायन लबन टेरिडोफाइटास आर फाउंड इन कूल एंड डैम्प शेडी प्लेसेस cool damp shady places and sandy soil conditions ये sandy soil conditions है कि एग्जामस यथ तिकाज टेरिडोफाइटा मुतलिक सोचो दपो यम हसा लबन यथस वाटर आसे कूल आसे शेडी प्लेसेस आसन तमिक मतलब गो यह हसा यह अथी लबन मगर अगर यह बे सनो अत कि यह ठीक पे अथी लबन ठीक है यह अथी ठीक पे लबन तमिक मतलब गो अवा यह हसा मगर ब्या क्वेश्चन हे कि सैंडी सॉइल कंडीशन मज हे तथ ग इंसानस कन्फ्यूजन दप टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा यमन आब जरूरत फर्टिलाइजेशन खतर यम कतन लबन कत सैंडी सॉइल कंडीशन मज ठीक है यह तरह कत फिक्र यह इंपॉर्टेंट पॉइंट यह अक्सर वैसे यम लिखमुत choose the incorrect statement all pteridophytas are found in cool damp shady some pteridophytas may flourish in sandy soil condition most of the pteridophytas are found in cool damp shady places a very few pteridophyta are hydrophytes आया कत समझ सोदो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटास यम क्या टर्म कर्म यूज यम टर्म यूज टेरिडोफाइटा आर फाउंड flourish in some may flourish in ठीक है यम कर्म ये टर्म यूज which of the following is incorrect some pteridophyta यह ठीक है all pteridophytas the pteridophyta यम लिखुन ठीक है most of the pteridophyta ठीक all गलत ठीक है आया कत समझ you may recall that Bryophyta and the dominant phase in the life cycle is gametophytic है ना तो gametophyte यानी plant cell आसान क्या gametophyte haploid आसान plant cell थोन याद gametophyte slide थोन लिखित haploid यह confusion Sporophyte slide थोन क्या लिखित diploid ठीक है तत क्या मेन चीज कि Bryophyta हसा dominant phase क्या Bryophyta में dominant phase को यथ कंडीशन में हमेशा प्लांट आसे प्रेजेंट गो गैमेटोफाइट बट इन टेरिडोफाइटास द मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट मेन बॉडी हसा स्पोरोफाइट यह थोन याद अगर न याद थो दैट मीन्स यह कर प्रॉब्लम ग कन्फ्यूज ब्रायोफाइटा तो यथ मज ठीक है टेरिडोफाइटा मज बे अक्सर क्वेश्चन आमुत कुस इथे कह लाइन अत मुतलिक आमुत प्रश्न कि प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइटा इज स्पोरोफाइट हैविंग नो रूट एंड स्टेम लीव्स गैमेटोफाइट हैव रूट एंड स्टेम लीव्स गैमेटोफाइट हैव नो रूट एंड स्टेम नो रूट सिस्टम एंड लीव्स स्पोरोफाइट हैविंग स्पोरोफाइट गो 2n गो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट क्या गो
हैप्लॉइड एन तवे लिखमुत अम ब्रोट कन ठीक है गो स्पोरोफाइट्स क्या स्पोरोफाइट्स आर दे आर डिप्लॉयड टू एन डिप्लॉयड एंड गैमीटोफाइट्स क्या गैमीटोफाइट्स आर हैप्लॉइड ठीक है यह थवन याद यह पॉइंट अगर बेसिक क्वेश्चन थवन यह याद यमिस यह क्वेश्चन रूद याद कि स्पोरोफाइट तो गैमीटोफाइट्स मज क्या डिफरेंस तमिस पत थवन हो चीज याद कुछ गैमीटोफाइट डोमिनेंट फेज कत मज गैमीटोफाइट ब्रायोफाइट मज डोमिनेंट फेट कुस गैमीटोफाइट यानी पूर होल प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड फॉर्मस मज मगर तिमन गैमीट बनान तिम बनान डिप्लॉयडस मज ठीक है तम पत मियोसिस गसान तम पत मियोसिस गसान यह क्वेश्चन वुच यह क्या हाउएवर इन Pteridophyta the main plant body is sporophyte which is differentiated into true roots. Main body is sporophyte which is differentiated into true roots. Okay, main body is sporophyte having true root stem and leaves. आया question चतुरे का फिक्र है true root stem and leaves how you point लिख it. The main plant body is a sporophyte which is differentiated into true roots stem and leaves. True root stem and leaves. आया यह कत समझ हाँ गो यह इम्पोर्टेंट चीज अमे अलाव क्या टेरिडोफाइटान मज कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड इनटू कत मज प्लांट बॉडी कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम तो लीव्स मज ब्रायोफाइटान मज कंप्लीट डिफरेंशिएशन ब्रायोफाइटान मज मज कंप्लीट डिफरेंशिएशन इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स हाउ यह पॉइंट लिखित ये लिखुत ना डिफरेंशिएट इनटू ट्रू गो कंप्लीट डिफरेंशिएट ठीक है द ऑर्गन्स पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर सिस्टम ये लिख वेस्कुलर टिश्यूज हसा इमन मज आसान इमन मज वेस्कुलर टिश्यूज आसान ठीक है वुच यमन मज क्या टेरिडोफाइटान मज इमन मज प्राइमरी रूट्स गई यम पे यह स्पोर जनरेट गसान तम पे गोडनिक रूट नेर तथ वन प्राइमरी रूट्स शॉर्ट पीरियड खतर यानी शॉर्ट लाइफ स्पेन शॉर्ट पीरियड तम पे नेरान एडवेंटिशियस रूट्स दीज प्राइमरी रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स था ये लिखित इन Pteridophytes primary roots are having short life and are replaced by adventitious roots स्टेम स्टेम टेरिडोफाइटान मज इरेक्ट क्या इरेक्ट ब्रायोफाइट के रूट्सन क्या वनान राइजॉइड्स थवन याद ब्रायोफाइट्स के रूट्सन क्या वनान राइजॉइड्स यह थवन याद यह क्वेश्चन एक बुझा अत पे क्वेश्चन यह क्वेश्चन क्या बल्कि जन वारिया क्वेश्चन अत पे ठीक है इन वनान राइजॉइड्स मगर यह स्टेम आसान टेरिडोफाइटान मज अगर सो अंडरग्राउंड क्या underground stem of Pteridophyta is called rhizome. यह थवन याद rhizoids roots rhizome stem rhizoids क्या underground rhizome ठीक है आए कत समझ कंफ्यूजन मज गए Leaves of Pteridophyte are small तिमन microphylls क्या microphylls अगर small leaves ठीक है तथ microphylls अगर large leaves तथ क्या megaphylls ठीक है गो megaphylls Pteridophyta क्या गो इस माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा क्या गो तो मेगाफिलस Pteridophyta
क्या गो यह करो थोड़ा बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन कि टेरिडोफाइटन मज मेगाफिलस तो माइक्रोफिलस अमिच एग्जांपल तो यह क्या गो वसा मेगाफिलस टेरिडोफाइटा क्या गो इस पे गणित माइक्रोफिलस माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइटा ठीक है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा गो यथ मन स्टेम लार्ज स्टेम क्या लार्ज तो लीव्स स्मॉल लीव्स क्या स्मॉल यह थवन याद यह एग्जामस इन वोल क्वेश्चन स्टेम लार्ज लीव्स स्मॉल माइक्रोफिलस क्या गो मेगाफिलस क्या गो मेगाफिलस गो अत मन मेगाफिलस गो अत मन क्या अत मन स्टेम स्मॉलर टेरिडोफाइटन मज लीव्स लार्ज यह थवन याद यह क्वेश्चन थो सही लिखित बुक लिखुत मगर मैक्रोफिलस क्या लिखुत मैक्रोफिलस मेगाफिलस बदल हाँ यह थी याद मेगाफिलस या माइक्रोफिलस मैक्रोफिलस हाँ मेगाफिलस या मैक्रोफिलस अमिक एग्जांपल बड़न लीवन लॉकुट स्टेम लकटन लीवन बड़ स्टेम एग्जांपल ऑफ माइक्रोफिलस स्लैजिनेला and example of macrophilus या megaphilus ferns अमिच एग्जांपल ferns ठीक है यह अंदर कत फिक्र वो प्लांट क्या प्लांट गैमेटोफाइट कि स्पोरोफाइट टेरिडोफाइटन मज प्लांट स्पोरोफाइट तमिक मतलब गो अगर प्लांट स्पोरोफाइट तमिक मतलब गो डेट इज डिप्लॉयड प्लांट डिप्लॉयड एक तो प्लांट स्पोरोफाइट बे क्या डिप्लॉयड स्पोरोफाइट मतलब गो डिप्लॉयड यह थवन याद यह एग्जामस मज अक्सर रिपीट गसान ठीक है गो यीहन थवन याद मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स तिम होमोस्पोरस अमिक मतलब गो ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर फाउंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वन टाइप ऑफ स्पोर फाउंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन था ये लिखित ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अत क्या लिखित सम ऑफ न मोस्ट ऑफ यह थवन याद यह कि मोस्ट ऑफ पे क्वेश्चन मज सम ऑफ मोस्ट अत लिखुन मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ ठीक है तक मतलब मोस्ट क्या होमोस्पोरस हैविंग वन टाइप ऑफ स्पोर तो एक्सेप्शन क्या था गो सम टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस some pteridophytes are heterosporous some are heterosporous some are heterosporous क्या गो तमिक मतलब गो यमन हेकन दोन या दो खुद दोन टाइपन हिंद स्पोरस वन ये हेटेरोस्पोरस तमिक मतलब गो अत मज क्या अत मज माइक्रोस्पोर तो मेगास्पोर अत मज क्या माइक्रोस्पोर तो स्पोर एंड मेगास्पोर गो दोन टाइपन हिंद स्पोरस यथ मज मगर यम टेरिडोफाइट्स ठीक है यह फॉर्मेशन ऑफ स्पोर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया यह क्या स्पोरेंजिया पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया था लिखित यह फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस एट या इन स्पोरेंजिया
यह बनान यह कत आसान स्पोरेंजिया इट इज ऑन द एबैक्सियल एबैक्सियल क्या गो एबैक्सियल क्या गो एबैक्सियल गो यह हसा एबैक्सियल आसान बैक साइड एबैक्सियल surface of leaf यानी it is on not on the line of the tree plant but यह आसान अक साइड लीव की मगर बैक साइड लीव की बैक साइड तल किन आसान यह ठीक है गो एबैक्सियल यानी अगर क्वेश्चन यह स्पोरेंजिया क्या दपो यह हसा स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स पता अगर यह प्रश्न यह कत आसान यह हसा लीव्सन पे प्रेजेंट क्या लीव्स पे प्रेजेंट अमु मतलब गो यम टेरिडोफाइटाज यमन पे स्पोरोफाइट्स स्पोरेंजिया प्रेजेंट आसान यानी टेरिडोफाइटन मज कत स्पोरेंजिया प्रेजेंट लीव्सन पे गो यमन लीव्सन क्या वनो यमन वनो रिप्रोडक्टिव लीव्स क्या वनो लीव्स हो लिखित टेरिडोफाइटाज हैव रिप्रोडक्टिव लीव्स यमन टेरिडोफाइट रिप्रोडक्टिव लीव्स तम रिप्रोडक्टिव लीव्स क्या करान तिमन रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया ये स्पोर करान प्रोड्यूस तो स्पोरेंजिया एट द एबैक्सियल प्लेस ठीक है गो रिप्रोडक्टिव लीव्स क्या रिप्रोडक्टिव लीव्स ठीक है तथ रिप्रोडक्टिव लीव्स मज ये स्पोरेंजिया क्या स्पोरेंजिया आया कत समझ गो रिप्रोडक्टिव लीव्स बे क्या अमे अलाव यमन रिप्रोडक्टिव लीव्सन अलाव फोटोसिंथेटिक लीव्स क्या फोटोसिंथेटिक लीव्स यानी दोन टाइपन हिंद लीव्स कमन पे टेरिडोफाइटन पे अकिस वनान रिप्रोडक्टिव लीव तो तथ लीव्स वनान स्पोरोफिल्स क्या वनान स्पोरोफिल्स तिमन वनान स्पोरोफिल्स तो फोटोसिंथेटिक लीव तिमन फोटोसिंथेटिक लीव्सन क्या वनान तिमन फोटोसिंथेटिक लीव्सन वनान फोटोसिंथेटिक लीव्सन क्या वनान तिमन वनान ट्रोपोफिल्स ट्रोपोफिल्स यमन वनान वेजिटेटिव लीव्स क्या वनान ट्रोपोफिल्स गई वेजिटेटिव लीव्स यह कत आया समझ दोन टाइपन हिंद लीव्स टेरिडोफाइटन मज अख लीव गो रिप्रोडक्टिव लीव तमिस वनान स्पोरोफिल तो ब्याख लीव गो फोटोसिंथेटिक लीव तमिस ज नाव ट्रोपोफिल या वेजिटेटिव लीव यह कत लिखम बुक मगर अम थोड़ा बहुत ही कम्प्लेक्स कर्म फिक्र तरान मज अथस कह अम क्या लिखम बुक कत अम लिखम द स्पोर बियरिंग द स्पोरोफाइट बियरिंग स्पोरेंजिया यानी ये स्पोरोफाइट प्रेजेंट तथ वन स्पोरेंजिया दैट इज सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेज यानी यह लीफ असली यह लीफ लाइक अपेंडेज क्या लाइक अपेंडेज यही क्वेश्चन यह कोर मे गो सिंपल मे दोप दोन टाइपन हिंद लीव्स रिप्रोडक्टिव लीव बे वेजिटेटिव लीव इस वेजिटेटिव लीव सह फोटो सिंथेसिस मगर प्रोडक्टिव लीव क्या बना तमिस मज स्पोर्स बना अम क्या लिखमुत अम दुत रिप्रोडक्टिव लीव क्या तवे थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स अम दुत अमिस लीफ लाइक अपेंडेज क्या लीफ लाइक अपेंडेज तथ वन स्पोरोफिल्स तमिस क्या वन स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर तथ वन स्ट्रॉबली क्या स्ट्रॉबली या कोन क्या वन कोम यानी ये स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये एक बनाई डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप क्या स्ट्रक्चर तथ वन स्ट्रॉबली क्या वन स्ट्रॉबली या तथ वन या कोनस क्या वन कोनस ठीक है आया कत समझ वैसा यह स्पोरेंजिया प्रेजेंट अगर यम ग्रुप्सन मज प्रेजेंट क्या ग्रुप्सन मज प्रेजेंट तथ वन सोरस क्या वन सोरस प्लूरल आमिक सोरी क्या प्लूरल सोरी ठीक है गो सोरी कत लबन सोरी लबन स्पोरोफिलस मज
Sporophyll. Sporophyll as per the book leaf-like appendage. Leaf-like इन था लिखित book पे था चल लेकिन leaf-like appendage. Sporophylls गई leaf-like appendage. Sorry गई group of Sporangia. Group of strawberry शासन a different compact structure, distinct compact structure. एक ही को strawberry यह है spores बनावनस एक ही ईगो strawberry एमिस काम आसान spores बनावन spores बनावन आये जका समझ एमिस काम क्या छ spores बनावन एक छ ये क्या छ rhizome ये छन root क्या छ rhizome यानी एक underground stem ठीक छ ये जान तरह का फिगर है यम छ त्रेन टाइप इन प्लांट आगो स्लैजिनला इबागो इक्विस्टम फर्न एंड सैल्विनिया ठीक छ ये गो फर्न ये क्या गो फर्न ये गो सैल्विनिया ठीक छ ये गो सैल्विनिया या छ वनान हॉर्सटेल इक्विस्टमस यम स्ट्रॉबेरी छ आसान प्रेजेंट ये एग्जामस यवान हॉर्सटेल का छ प्रेजेंट हॉर्सटेल क्या छ वनान तके तमिस हसा छ स्ट्रॉबेलस आसान प्रेजेंट क्या छ आसान स्ट्रॉबेलस छ आसान प्रेजेंट आया का समझ हां ये जहां तरह का फिगर कंफ्यूजन मा छात मज के ना वसा एक्सपोर्ट वन यमन मज आसा छ आसान होमोस्पोरस बे के छ आसान यमन मज हेटेरोस्पोरस छ ना होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस वसा यम छी है का लेखन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियासिस टू फॉर्म द स्पोर मदर सेल यानी स्पोरेंजिया के छ सान या सच करा प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियासिस तब मतलब गो ये स्पोर आसे सो क्या है हैप्लॉइड सो आसे हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट टू गिव राइज टू द इनकन्स्पीशियस यानी इसने अथी क्या वारिया स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर क्या छ आसान सो मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस हाउ लिखित प्रोथैलस क्या छ आसान लेख प्रोथैलस हसा छ आसान गैमेटोफाइट तमी कैरेक्टर हसा छ आसान कैरेक्टर्स ऑफ प्रोथैलस था लिखित इट इज इनकन्स्पीशियस यानी वारिया स्मॉल ठीक छ मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग mostly photosynthetic thalloid ठीक है मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड है का समझ ये छ यूनिक कैरेक्टर यस कुस फोटोसिंथेटिक थैलाइड ये छ यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स ये यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स अगर कहां प्रिछ स्पोर्स कॉमन मन स्पोर्स कॉमन मन फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेटिक स्पोर्स कॉमन मन या गैमेटोफाइट्स कॉमन मन फोटोसिंथेटिक मोस्टली गैमेटोफाइट्स यम फोटोसिंथेटिक तिम टेरिडोफाइट मास ठीक है यानी यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स या दम क्वेश्चन है कि प्रोथैलस इज कन्स्पीशियस आस लिखित कन्स्पीशियस आस यम बुक क्या दिखमुत क्वेश्चन गुरु टेरिडोफाइट है এখন ओके वैसा एमएससी गॉडनेथ ये क्वेश्चन दिखमुत ये स्पोरोफाइट ये फोटोसिंथेटिक आसो नहीं होता Okay, prothallus in Pteridophytes are
non-vascular, haploid, multicellular, mostly photosynthetic thalloid gametophytes. Which path question is the option? Vascular, multicellular, sporophyte. Ima chasan sporophyte ke. Sporophyte go imis diploid number as. Isna sa meiosis gamut. Tag matlab wo iche haploid. Free living gametophytes. Free living chasan gametophyte. मगर 2n चुनस बच लिखमत which कूता confusion चुन gormut हाँ यमिस सी ते बिना यमिस सी पता आसे gametophyte को n किन 2n सही की question is thallus plant body in same pteridophyte ये सोदी गलत ठीक है आए चे का समझ नॉन वेस्कुलर थोने याद मगर ये क्या आसान नॉन वेस्कुलर ये आसान नॉन वेस्कुलर आए का समझ कंफ्यूजन मच क्या हाँ ना ये चाहन तो यार ये था से लेके इन मोस्ट टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस इज स्पोरोफाइट in most ने क्या mostly she gametophyte in some pteridophytes prothallus is sporophyte saprophytic is saprophytic क्या गो या ये हेटेरोट्रॉपिक ये एग्जांपल था उन या ठीक है ठीक है हुशासान गैमेटोफाइट मगर there is no relation between main sporophyte plant and prothallus. Prothallus is gametophyte made up of thallus and rhizoids. It is non-vascular. It is non-vascular. It is non-vascular. In plant kingdom, gametophyte is always non-vascular. Gametophyte is always non-vascular. Non-vascular. Gametophyte is always non-vascular. ठीक है ये जहां तरह का फिक्र है वैसा gametophytes require cool damp shady places to grow reproduction खातिर चाहिए जरूरत cool damp shady place because of their specific restricted requirement they need for water for fertilization मन के जरूरत आप the spread of the living pteridophyta is limited and restricted to narrow geographical region इनसे सर्च फुलियत के narrow geographical regions में से gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia यानी यम gametophytes चासन यमन मजा छ male and female sex organs आसा antheridia तो archegonia water is required for transfer of antherizoids यानी male gamete released from antheridia male gamete इस antheridia छ करना release को उस male gamete तच नाव antherizoids एंथेरोजाइड्स ठीक है ये मेल गैमेट क्या है गैमेट सब लिखित ये मेल गैमेट ठीक है अम खतर ताकि यह गसा मूव यानी तक मतलब वो यह फ्लैशलेट आसान होते वुचान होते फ्लैशलेट ना सह मूव गसान पाने वातान कोत निश फीमेल निश अम सद खतर क्या वाटरस करान यूज एज अ मीडियम टू ट्रांसफर ठीक है male gametes are released from antherizoids and the mouth of archegonia. Fusion of gametes with egg present in the archegonium results in the formation of zygote. Zygote क्या है diploid. The zygote therefore produce multicellular wall differentiated sporophyte which is dominant phase of pteridophytes. यानी इस बनावा sporophyte यानी diploid इसका क्या है dominant state in majority of the pteridophytes. In majority of the pteridophytes all spores are similar kind है homo क्या बने वैस homosporous है आसान ये लेसन गडनेथ लाइन all spores are similar kind ये मन इसी गडनेथ ही वो नहीं मासा जाता homosporous है homosporous go homosporous all pteridophyte spores are of similar kind but some such plants are called homosporous ठीक है गो कुछ homosporous था से लिखित lycopodium
डायोप्टेरस ठीक छा यम क्या छा होमो स्पोरस यम होमो स्पोरस मगर क्या हसा छ आसान मैक्रो हेटेरोस्पोरस यानी मैक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर मज आसान प्रेजेंट ठीक छा अमिच एग्जांपल क्या छ मैक्रोस्पोरस स्लैजिनिला एंड साल्विनिया थी लिखित यह क्वेश्चन एग्जामस इन वोल स्लैजिला एंड साल्विनिया ठीक छा स्लैजिला एंड स्लैजिनिला एंड साल्विनिया ठीक छा यम करान प्रोड्यूस लार्ज स्पोर तो स्मॉल स्पोर्स मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल gametes respectively gametophytes. The female gametophytes in these plants are released on the parent sporophyte for their viable period यानी इस फीमेल gametophyte इसके टाइम खतर नेरान बस यानी प्लांट बॉडी पे आसान प्रेजेंट the development of zygote into the young embryo takes place within the female gametophyte ठीक है the event is the precursor to the seed habit considered as important step in the evolution यानी ये इवेंट यानी इम करान प्रसाद लिंक कुन चीजस एवोल्यूशन से यानी गडने था ये गोमुत अमे पे हेच प्लांट्सो पत सीड बनावन ठीक छा यह वनान यानी ये प्रिकर्सर यह डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइटस मज गसान यानी टेरिडोफाइटान मज गसान डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो within the female gametophyte within the female gametophytes आए का समझ ये जहां तरह का फिक्र है दो ये पॉइंट यह हसा अमी एवोल्यूशनरी स्टेप्स पे सीड हैबिटेट आमुत ये करना टेरिडोफाइटान मज दे आर क्लासिफाइड इनटू द सिलोप्सिडा ठीक है लाइकोप्सिडा सिनोप्सिडा तो बे टेरोप्सिडा सिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा इस थोन याद ये टेबल सिलोप्सिडा हिच एग्जांपल सिलोटम यमिच एग्जांपल लाइकोप्सिडा हिच स्लेजिनिला एंड लाइकोपोडियम यमिच एग्जांपल सिनोप्सिडा हिच इक्विस्टम एंड पिटेरोप्सिडा टेरोप्सिडा हिच एग्जांपल डायोप्टेरस एंड पेट्रस एंड एडेंटम यम थोन याद विसा इस जो गने सिलोप्सिडा क्या गो इस पे ठीक क्वेश्चन ये इस जो गने सिलोप्सिडा क्या गो इससे सिलोप्सिडा क्या है सर सिलोप्सिडा हम जो बना एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स चिमन वनाने क्या वनान यमन एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स ठीक है यमन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आसान यमन हिंद कैरेक्टरिस्टिक्स आसान यमन हिंद प्लांट बॉडी आसान डिफरेंशिएट इनटू स्टेम यत क्या वनान राइजोम राइजोम्स बे क्या वन आसान बे आसान यमन स्केली लीव्स बे क्या आसान यमन मज राइजोइड्स गई रूट लाइक अपेंडेजेस ठीक है ये जहां तरह का फिक्र है हाँ राइजोम्स गई अंडरग्राउंड स्टेम राइजोइड्स गई रूट लाइक अपेंडेज रूट लाइक पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक है ये तो पे यत पे क्वेश्चन राइजोम्स तो राइजोइड्स पे क्वेश्चन यह बेसिक आसान वो ना बेसिक कुन चीजु अम चीजु बेसिक क्या अम चीजु बेसिक टर्मिनोलॉजी वन क्या अमिच एग्जांपल सिलोटम ना अमिच एग्जांपल सिलोटम ठीक है वैसा इस ये सिलोप्सिडा अमिक फोसिल प्लांट्स कम अमिक सिलोटम सिलोटम जी सिलोटम इट इज यह लिखित इट इज लिविंग फॉसिल a living fossil silotum is a living fossil यानी यह सारे खोत प्रिमिटिव अमिक अकोई प्लांट निश वुनुक तान तवे थोगस नाव फॉसिल ठीक है सिलोटम लिविंग फॉसिल अमिक फॉसिल प्लांट्स कम
ठीक है, यानी तिम वनकस प्रेजेंट क्या अमिच फॉसिल प्लांट्स छ राहिनिया एंड होम्योफाइटन्स यम छ अमिक क्या यम छ अमिक फॉसिल प्लांट्स राहिनिया एंड होम्योफाइटन्स ठीक है ये जहां तरह का फिक्र गो सिलोटम वुचु यह हसा छ एंशिएंट टेरेस्ट्रियल प्लांट ठीक है प्रिमिटिव प्लांट हसा छ अमिस हसा छ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या प्रिमिटिव कैरेक्टर छ अमिस हसा छ स्केली लीव्स वुनिक तान वनियो न कहीं टेरिडोफाइटान छ स्केली लीव्स मा वन अस वोनी नहीं अस दोप यमन हसा छ प्राइमरी रूट्स तम पत यमन आसान एडवेंटिशियस रूट्स मगर येतस क्या वन अस यमिस हसा छ राइजॉइड्स आसान यमिस क्या छ आसान राइजॉइड्स आसान ठीक है ये जानता था याद यम क्या पॉइंट अत मुतलिक जरूरी पढ़न ताकि ये कि क्वेश्चन है क्या एमे पे यत मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्लॉप्सिडा अगर वन यम ज दिख राहिनिया एंड होम्योफाइटन ठीक है गयो गलत क्वेश्चन अस दपा ना यम कहीं ये तमें मतलब वो थोड़ा बहुत एडवांस नॉलेज गस आसन तम पत क्या अम पत दयम लाइकॉप्सिडा लाइकॉप्सिडा क्या गो लाइकॉप्सिडा अमिस वन क्लब मॉसेस क्या वन क्लब मॉसेस ठीक है क्लब मॉसेस हसा अमिच एग्जांपल क्लब मॉसेस अम क्या अमिच एग्जांपल दिखम स्लेजिनिला एंड लाइकोपोडियम थोस ये एग्जांपल लिखित यमिस मज प्लांट आमुत डिफरेंशिएट करने रूट स्टेम एंड लीव्स आए कत समझ से तरे कत फिक्रे लीव्स क्या लीव्स हसा ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक ठीक है आए कत समझ ये तरह कत फिक्रे तिमन क्या वन फोटोसिंथेटिक लीवन तिमन वन ट्रोपोफाइलस ठीक यस यमन ब्या रिप्रोडक्टिव लीफ या लीफ लाइक अपेंडेज यमिच काम रिप्रोडक्शन करें तमिस क्या वन स्पोरोफाइलस वन स्पोरोफाइलस स्पोरोफाइलस स्पोरोफाइल यमन मज यह प्रेजेंट एट टिप ऑफ प्लांट लाइकॉप्सिडा मज स्पोरोफिल रिप्रोडक्टिव लीफ यमिस मज क्या रिप्रोडक्टिव लीव्स मज ये स्ट्रॉबिलस हाँ यमिस वन स्ट्रॉबिलस अमिस मज क्या रिप्रोडक्टिव लीव्स मज स्पोरेंजिया इसमें स्पोरेंजिया यह एट द टिप ऑफ द प्लांट यह एट द टिप ऑफ द प्लांट तो अत वन स्ट्रॉबिलस या कून किस वन कून ये पोड़ वनी मगर यह एग्जांपल कमिच लाइकोपोडियम ठीक है एग्जांपल अमिच लाइकोपोडियम यमिस लाइकोपोडियम वन क्लब मॉस कॉमन नेम क्लब मॉस लाइकोपोडियम मेडिसिनल प्लांट लिखित मेडिसिनल प्लांट ठीक है ब्या क्या एग्जांपल स्लेजिनीला स्लेजिनीला कॉमन नेम संजीवनी वनान संजीवनी ये थी याद ये पॉइंट संजीवनी ये केमे मज एक अगर टेरिडोफाइटा मज ना सर को डिफिकल्ट क्वेश्चन ये केमे मज एग्जांपल पृछो अमुक अल्टरनेट नेम पृछो सह दी लाइकोपोडियम सह क्या दी सह दी क्लब मॉस अमुक नाव लाइकोपोडियम बे क्या दित लाइकोपोडियम दी बे क्या दित यमुक संजीवनी दित ठीक है यमिच काम क्या वन रिजरेक्शन प्लांट क्या वन रिजरेक्शन प्लांट या स्पाइक मॉस दयिम नाव अमुक स्पाइक मॉस यस रिजरेक्शन प्लांट
रिजरेक्शन प्लांट अक्सर टेरिडोफाइटा मज अगर क्वेश्चन देखना क्वेश्चन पेपर पे नजर टेरिडोफाइटा मज अक्सर क्वेश्चन तिकाज यह थोड़ा बहुत याद कर बसान मुश्किल अत मज क्लास ते आमित दिन हु ते आमित दिन ओतम ब्रायोफाइटान मज आमती दिन ये आमुत असल पे क्वेश्चन रेज कर तमें लोग यमो वाइड ब्रॉड एरिया थोमुत ये सान खतर ठीक वो अम पे अम पे सिफिनो सिफिनोप्सिडा 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 अमिच एग्जाम्पल कस अमिच एग्जाम्पल इक्विस्टम 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 अमिच वन हॉर्स टेल हॉर्स टेल हॉर्स टेल प्लांट बॉडी of horsetail is differentiated into root, stem and rhizomes. Stem वन ये rhizome क्या वन root, rhizome, stem and scaly leaves. ये में scaly leaves क्या मन मजा सन scaly leaves. आसमान silica present. Silica is present in epidermis of the plant. Is present in epidermis. एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट ठीक है तम की वजह से क्या सरफेस ऑफ दिस प्लांट इज रफ ठीक है ये जान तरह का फिक्र अगर हॉर्स टेल्स पान वन कोलाइड गछन क्या गछन कोलाइड अगर ये इक्विस्टम गछन पान वन कोलाइड यम छ हेकन फॉरेस्ट फायर कॉज करित ठीक है तमें मतलब गो ये जंगलन मज नार लगान तथि मोस्टली वुचन कि इक्विस्टम प्रेजेंट या ये एरिया मज अगर इक्विस्टम प्रेजेंट आसे तक नार लगित इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द फॉरेस्ट फायर मतलब जरूरी कह कि सिगरेट चोमुत या गनक तुजी हेत गोमुत तो दितमुत नार द रीजन ऑफ द फॉरेस्ट फायर मे बी इक्विस्टम यह थवन याद था ये लिखित यह पॉइंट समटाइम्स असल जानन वोल वो जनरल नॉलेज पता वो प्रसाय अत बेसिस पे क्वेश्चन ठीक है ये बनान इस कोन ये बनान स्ट्रोबिलस सह बनान एट द टिप ऑफ द प्लांट टिप ऑफ द प्लांट अत क्या हरो पत टेरोप्सिडा टेरोप्सिडा वो थोत ते याद गोडनुक स्लोप्सिडा दयिम लाइकोप्सिडा त्रेयिम सिफिनोप्सिडा चूरिम टेरोप्सिडा ठीक है हाँ स्लोप्सिडा लाइकोप्सिडा सिफिनोप्सिडा टेरोप्सिडा छे चोर थवन याद हाँ प्रिमिटिव कुछ ममस स्लोप्सिडा ठीक है तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा गो टेरोप्सिडा इट इज लार्जेस्ट ग्रुप it is largest group. It is commonly called as ferns. It is commonly called as ferns. It is commonly called as ferns. ठीक है ferns are mostly megaphilous. Ferns are mostly megaphilous. Ferns are mostly megaphilous. Megaphilous क्या था ये नाम मैक्रोफिलस ठीक है मतलब क्या गो rhizome is small, leaves are large. Leaves are large. The leaves of Pteropsida are called fronds. यही क्वेश्चन ये फ्रॉन्ड्स पे ब्रायोफाइटान मज ठीक है ये फ्रॉन्ड्स कत पे ब्रायोफाइटान मगर द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइटास इन द क्लास ऑफ टेरोप्सिडा इज कॉल्ड फ्रॉन्ड्स ठीक है ये थोड़ा याद यंग लीव्स पे मल्टी सेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या हेयर्स मल्टी सेल्यूलर हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन यंग लीव्स cellular hairs
are present on young leaves. Young leaves. ठीक है? Young leaves. ठीक है? Yus young rhizome आसान है. Rhizome क्या है आसान? Underground stem. Yus young rhizome of fern है आसान. Young rhizome of fern. Young rhizome. Rhizome of fern. तत् क्या चवनान? तत् चवनान rare. ये थोड़ी भी कितने लिखित? Young rhizome of furnace क्या चवनान? अच्छवनान rare nenta. Important हो लिखित. Rare nenta. ठीक है? RARNENTA. rare nenta. तो मतलब वो अगर इसी की एक ये तस्नीरान चना था नो एक ये चुना ना रर नेंटा मगर इका में फर्नुक आए का समझ ये तस्वीर फर्न चना एक ये तस्वीर फर्नस अगर ये तस्वीर राइजोम नेरे राइजोमस में नेरे यंग राइजोम इस आए से ताचुना रर नेंटा ठीक है आए का समझ अमीज एग्जांपल क्या है अमीज एग्जांपल छे अमीज एग्जांपल छे Diopterus petrus and adentum. Diopterus petrus and adentum. Diopterus petrus and adentum. Visa. You see adentum छे adentum is one walking fern. किस वनन? Walking fern. Achwanan Walking fern. terrace Achwana walking fern. Adentum is called walking fern. ठीक है? Largest pteridophyte question. Largest pteridophyte question. Largest pteridophyte is Alsophilia. Alsophila. Alsophila is largest pteridophyte. Achwana tree fern the. Alsophila. क्या सुनन? Alsophila. It is largest fern. Salvinia थी क्या है? It is the example of fern. Salvinia is the example of fern. Azolla is Salvinia and Azolla. Look, Salvinia and Azolla. Salvinia and Azolla. Salvinia and Azolla. They are aquatic ferns. Azolla and Salvinia. They are aquatic ferns. And they are aquatic ferns. ठीक है? ठीक है? ये सिम fossil fuels ऐसे मिलान च क्या है मिलान? Fossil fuels. ये शु because of the largest pteridophytes. Fossil fuels इम जाना है ना कोल नेराना है. It is because of the giant ferns या giant pteridophytes. ठीक है? चलो बेस क्लास में पढ़ो इस जिम्नोस्पर्मस चलाकते तो तम पछे एंजियोस्पर्मस ती मकलाओ जिम्नोस्पर्मस बेस क्लास में ठीक है चलो